So in the last video we have seen about the wave function expressions for particle in one-dimensional box. So in this video we are going to plot the wave function versus coordinate. So psi versus x plot we need to do at first for n equals to 1, then n equals to 2, then n equals to 3. Here we are considering only the three lowest energy levels. So now we know the expressions for psi. So for psi, that is root 2 by L sine n pi x by L. So for n equals to 1, that will be just pi x by L. So at n equal, for x equals to 0, what's going to happen here? Sine function will be 0 because sine 0 is 0. Then what about for x equals to L by 2? Then psi will be root 2 by L sine pi by L into x means L by 2. So that will be sine of pi by 2, and sine pi by 2 means 1. So the value will be root 2 by L. Let's suppose this is the point. Now let's talk about for x equals to L. So psi will be root 2 by L sine pi by L into L. We all know that sine pi is 0. 0 into this 0. So now if you just join this line, this curve, you will find out like this type of curve. Okay. So this is the plot between psi and x for n equals to 1. Now let's talk about for n equals to 2. So okay. So our plot actually look like this one. Okay. Now let's talk about for n equals to 2. क्या होगा n equals to 2 पे? फॉर्मूला आ जाएगा psi equals to root 2 by L sine 2 pi x by L. So at x equals to 0, क्या हो रहा है? Sine function is 0. Then the psi will also be 0 because sine 0 means 0 and 0 multiplied by some constant is also 0. क्या होगा at x equals to L by 4? L by 4 पर क्या होगा? हमको निकालना होगा. At x equals to L by 4, psi will be root 2 by L sine 2 pi by L into x. X means L by 4. Okay, L by 4. So L and L are cancelled out. 2 and 4 are cancelled out. So you will have only 2 by L sine pi by 2. And sine pi by 2 means 1. So this is the point. What about for x equals to L by 2? So psi will be root 2 by L sine 2 pi by L into L by 2. Okay, I am doing by using this formula. Okay, this formula. This will be root 2 by L. L and L are cancelled out. 2 and 2 are cancelled out. Okay. So sine pi means sine 180, and sine 180 means 0. Okay, so this is the point where psi is 0. Now let's talk about for x equals to 3 pi by 4. क्या होगा? Psi equals to root 2 by L sine 2 pi by L into 3 pi by 4. 1 minute. Okay, so 2 pi by L into L by 3L by 4. This is 3L by 4, not 3 pi by 4. 3L by 4. L and L are cancelled out. 2 and 4 here.
So we have root 2 by L sine 3 pi by 2, that is 270 degree, and sine 270 means -1, that is in this region, in this point. I can share a little trick. That is not a trick, that is also given from trigonometric relations. That if it is our coordinate, so it is all. This is sine, this is tan, this is cos. So this region, I mean this line represents the 0. This is also 0. This is +1. This is -1. Okay. So this is actually 0 degree. This is 90. This is 180. This is 270. The angle I am talking about. Okay. The value is -1 for 270. So what all the psi will be? Minus of square root of 2 by L. Okay. So this is the region we know. Minus of 1 into this one means this one. Anyway, so let's talk about for x equals to L. It is very clear that if we input x equals to L, then L and L will be cancelled out, right? Then sine 2 pi, again sine 2 pi represents like sine 0 degree, and that is 0. Root 2 by L into 0 means 0. So the point is here. Now just join. Then the point, I mean the curve look like this. Okay. Look at that, here a point arises where the psi is 0. That means at L by 2. Okay. We will come later about this point that has a name and that has a great significance, and how uh, classical behavior fails and how quantum mechanics arises. So we will talk about later by using these points. ठीक है, तो आगे चलते हैं फॉर n इक्वल्स टू 3 पे. बट n इक्वल्स टू 3 पे हम क्या करेंगे, हम ऐसे पॉइंट को नहीं निकलेंगे. ठीक है, हम बस देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल हमारे पास कर्व आ रहा है. और ये जो साई है ना, साई है साइन फंक्शन, मतलब ऐसे शुरू होता है ऐसे खत्म होता है. ठीक है, खत्म तो नहीं होता. तो इसमें क्या होगा हम देखेंगे, हमको कितने ऐसा पीक मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक पीक मिल रहा है. अरे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों को एक मिल रहा है ऊपर एक नीचे. ठीक है, सो इसमें क्या होगा, हमको 3 पीक मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि साइन फंक्शन शुरू होता है यहाँ से. ऊपर तो एक मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, यहाँ पे एक ऊपर और मिलेगा. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे जाएगा कर्व. ठीक है, ये अगर कॉस फंक्शन होता तो ठीक इसका उल्टा होता, तो नीचे जाता 2, ऊपर जाता 1. ठीक है, by using symmetry properties, I mean by using symmetry, just representing symmetry, we can easily plot for n equals to 3. So this is nothing but our L by 2. Okay, so this is our curve. Look at that, here is also 2 points which arises where the wave function is 0. So don't you feel, if we increase the quantum number, then the number of these such points is increases, this point increases, and these points where the wave function is 0 is called node. We'll come later, we'll come to this point later, that the कहाँ पे probability of finding the particle 0 आ रहा है, उसी को हम लोग node मानेंगे. But the more generalized definition is that
जहां पे वेव फंक्शन जीरो आता है उसी को हम लोग नोड मानते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन जीरो आएगा तो प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली जीरो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या देख, हम यहाँ पे क्या वी कैन सी दैट अगर हम लोग क्वांटम नंबर इंक्रीज कर दे तो हम लोग को नोट का नंबर भी ज्यादा मिलेगा। इसमें क्या है जीरो नोट, इसमें क्या है वन नोट, इसमें क्या है टू नोट, इसमें क्या है n इक्वल्स टू वन, यह है n इक्वल्स टू टू, यह है n इक्वल्स टू थ्री। So there must be a relation between the quantum number and node, and the relation is node equals to n minus 1. This is our formula for node for particle in a one dimensional box. ठीक है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ओके, सो हम देख पा रहे हैं कि if we consider the hydrogen atom case, let's say for 1s orbital, इसमें क्या होगा, ग्राफ ऐसा आता है साई वर्सेस आर का, मतलब एट आर इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगा, हमको वेव फंक्शन मिलेगा। एट आर इक्वल्स टू जीरो का मतलब यही होता है न्यूक्लियस के, ठीक है, न्यूक्लियस पे। बट न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन कैसे आ सकता है, मतलब अगर वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, मतलब वेव फंक्शन अगर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का पाने का प्रोबेबिलिटी बताते हैं तो डेफिनेटली न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। बट ये होता नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये तो प्रूव्ड है। तो ये जो साई का एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इसका क्या होगा, एक्चुअली psi has no physical significance at all, it is just a mathematical function, yes, which is used to describe the probability, because we need psi to get the psi square d tau value. Okay, psi has a significance not directly, it has significance indirectly or indirectly. Anyway, so we need to discard psi, rather we need to introduce psi square, that is probability density. Okay, actually psi square into 4 pi r square d tau आना चाहिए, that is called probability distribution function. But anyway, if we consider the probability density, then what we will do, we will introduce psi square rather than psi. Okay, so we need to plot psi square versus x. Okay, so we know as psi square is used to represent probability density, so psi is less than 1. ओके, अगर साई लेस देन 1 हुआ तो डेफिनेटली वी कैन से दैट साई स्क्वायर क्या होगा, लेस देन साई। ठीक है, ओके, नाउ if we plot psi square versus x, and we all know that psi square is probability density which is also less than 1. हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, और वन केस प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। ये तो वन काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा वन से छोटा या फिर वन होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज वन। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा वन से छोटा होगा, दैट इज साई स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन वन।
नाउ अगर साई स्क्वायर लेस देन 1 हुआ, साई भी अगर लेस देन 1 हुआ, कैन से साई स्क्वायर क्या होगा, साई से डेफिनेटली छोटा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास साई है 1/10, तो साई स्क्वायर क्या होगा, 1/100 होगा। यस 1/100 होगा। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर साई स्क्वायर 1/100 है तो साई होगा 1/10, मतलब साई ऑलवेज ग्रेटर देन साई स्क्वायर। हमारे पास पहले जो कर्व आ रहा था कुछ ऐसे करके, मैं यहाँ पे रेफरेंस ड्रॉ करता हूँ साई का, ठीक है। सपोज इट इज अबाउट साई वर्सेस एक्स। नाउ व्हाट अबाउट साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या होगा, छोटा हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट साई स्क्वायर, आई मीन व्हाट अबाउट n इक्वल्स टू 2। ये क्या था, ये था n इक्वल्स टू 1 के लिए। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 2 सेम केस होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। मैं पहले ड्रॉ करता हूँ जो रेफरेंस दैट इज साई, हम साई के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले था हमारे पास कुछ ऐसा प्लॉट, ठीक है। अब क्या होगा, साई स्क्वायर पहले वैल्यू तो छोटा होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, मतलब फेस, पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस ऑफ द वेव, ठीक है। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे ना, तो माइनस क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, वैल्यू तो डिक्रीज करेगा, साई स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन साई, बट क्या होगा, ये जो साइन आया है, साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, मतलब ओनली पॉजिटिव साइन, ओनली पॉजिटिव फेस वी विल गेट। So this is our reference like psi, and we will have psi square like this. Okay, this is our psi square versus x. Now what about for psi square versus x for n equals to 3? तो इसमें क्या होगा, ओके एक मिनट, इसमें हमारे पास जो ये जो था ना मैक्सिमम, एग्जैक्टली ये क्या था, ये था 2/l इसका स्क्वायर रूट। जब हम लोग साइज स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, साइज स्क्वायर हो जाएगा 2/l, ठीक है। एनीवे, it is always less than 1. Root 2/l is always less than 1. So psi square is 2/l. Okay. Now what about for n equals to 3? Our psi versus x plot was looking like this. Just a rough diagram. Okay. Please manage it. I need to make the diagram with clarity. Okay. So okay. So it is also it is also positive phase and negative phase. So
for psi square versus x, we will do like this. Okay, so this is for n equals to 3. Now it is also called the nodal points. It is here, two are there. Now don't you feel that if we increase the quantum number, ये जो हमारे पास मैक्सिमम जो आ रहा है और ये हमारे पास जो नोड जो पॉइंट आ रहा है, जो नोड आ रहा है, ये पहले था इतने डिस्टेंस में, अभी ये आ गया थोड़ा सा डिस्टेंस में। मतलब जब हम लोग हायर क्वांटम नंबर पे जा रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमा और जो नोड है उनका जो डिस्टेंस है ना, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा हमारे पास n का वैल्यू आएगा जहाँ पे हमको कुछ ऐसा कर्व दिखेगा। एट हायर वैल्यू ऑफ n हमको जो कर्व आएगा, हमको कुछ ऐसा कर्व दिखेगा। ठीक है, या फिर इसको मैं इसके ऊपर वाला जो मैं ड्रॉ किया उसका डायमेंशन को मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, नहीं तो ये बड़ा हो, मतलब as it look like a bigger one, so we cannot imagine what I want to say. मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मैक्सिमा और ये जो नोड है, इन दोनों में गैप क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 एट अ हायर वैल्यू ऑफ n, लेट्स से n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो क्या होगा, हमको ये मैक्सिमा और ये जो मिनिमा है ना, इन दोनों में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमा और मिनिमा विल ओवरलैप एज it will look like at higher value of quantum number। तब क्या होगा, हमको ऐसे डिस्क्रीट, हम लोग को ऐसा मतलब जो एनर्जी वैल्यूज आएगा ऐसे डिस्क्रीट नहीं आएगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, वेव फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स होने लगेगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं, ये जो नोड है ना, नोड गायब हो जाएगा, तो हमको कंटिन्यूअस एनर्जी का स्पेक्ट्रम भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं, और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब एट हायर क्वांटम नंबर, एट वेरी हायर क्वांटम नंबर, क्लासिकल बिहेवियर चेंजेस इनटू, सॉरी, क्वांटम बिहेवियर चेंजेस इनटू क्लासिकल बिहेवियर, उसे भी बोलते हैं बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। एंड एट दैट पॉइंट particle behaves like classical objects। Okay, so we will talk about Bohr's correspondence principle later also। Okay, but it is point to be remembered, अगर हम लोग n का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो हमको क्या होगा, नोड भी बढ़ता जाएगा, और जो मैक्सिमम पीक और नोड के अंदर जो गैप है वो छोटा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा जो गैप है। ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो गैप बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्लोज टू 0 हो जाएगा, तब हमको ऐसा क्वांटम डिस्क्रीट बिहेवियर नहीं आएगा, तब हमको क्लासिकल बिहेवियर शो होगा। ठीक है, so on the next video we will see how quantum particles, how quantum mechanics explains classical mechanics, because if quantum mechanics cannot explain classical mechanics, so there will be no significance of quantum mechanics, because in reality we see objects like macroscopic bodies. So if quantum mechanics is able to explain the classical behavior,
In the macroscopic world as well as in microscopic world, then quantum mechanics will be like a unified theory. That is the topmost theory. Okay. So on the next video, we will see about how quantum mechanics changes into classical mechanics or classical behavior and how can it be explained. Okay. Till then, thank you so much.